Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and well, and your days are going on very well. Today we are going to discuss about chapter number 8, the head driver. This is second book of your English class 10th as per CBSE board. Footprint without feet. Okay. So the writer of this chapter is Sinclair Lewis. So let me read or let me tell you about introduction of this chapter. The story, The Head Driver, is about a man named Oliver Ludskill. He was a cunning man and who was a witness in a case, but he ignored all summons. Means whenever there is a time for going to witness, he is not willing to go there. And at the same time, what happens there? So a young lawyer was given the duty to find this man in New Milan. There he met a helpful hack driver, and that hack driver promised him to search the man to whom he is searching, whose name is Oliver Ludkinson. And both of them roamed the city, and throughout the city they roamed, but they found none of him. So finally, this fellow returned, and after his second trip, or after his second round, he knew that the fellow, one who was roaming with him, he was the Oliver Ludkins, to whom he was searching. So that was something laughing or insulting for him. So let us look at the summary of this chapter. The story is about a junior assistant clerk. Okay, his job was to serve someone. As he hated this work, okay, he thought about running away to his hometown, and to become a lawyer right away. One day, he was asked to serve as someone, and due to digestion, so he has to search the man, one who has to witness in the court, whose name is Oliver Ludkinson. Then he went to the particular the small city that is called New Milan. Okay, he went there, and he reached there. After reaching, he found a hack driver, and I thought he might have said to whom he was searching. The hack driver also promised him to enuclear or to find him. So finally, both of them started to find him, and the hack driver talked with a very good mood, and he took him to see the different side of the small city. And by the way, he was talking very politely, and he was showing as he is too much helping him. And at the same time, he has taken 2 rupees per hour. Okay, that is his rent, as they would roam to that small city to find Oliver Ludkinson. At the same time, they roamed and roamed, and it became almost afternoon, and the narrator got hungry, so that he ordered for the lunch. At the same time, the hack driver, he took him to his home, and they have taken their lunch, and for the lunch preparation,
he has taken heart to learn from him also. Then after he took him to different places, and where he used to there, where Oliver Lutkins used to be there. So he took him in the fridge where the Lutkins played poker, and from there to a barber, and then to a pool room. They were not able to find Lutkins. Then after having their lunch, he took him to his house. His house means Oliver Lutkins' house. So when they reached there, his mother was there, and his mother was a very angry lady. And when she heard that they have come to search her son, okay, for witnessing in a court, so that lady became very angry, and she took a rod and marched toward them, and that was very fearful time for them, and both of them, the hack driver and the lawyer, they run away from there. Okay, so by this way they have done whatever they supposed to do, and everything they have done, but they couldn't find to that fellow. So then after he went back to his own town, okay, so with unsuccessful. Then after a day has come there to come to the to bring to Lutkins to be witness. But for that reason, once again, as the case was coming up for hearing the next day, he was asked to go back and somehow serve someone on Lutkins. A man who knew Lutkins went with him. So again, he went to that particular city, the small city, previous where he went. Now he is not alone, so somebody is there with him, and one who knows very clearly to Lutkins. When both of them reached there, and he came to know that that hack driver is Oliver Lutkins. And finally, when Oliver Lutkins and his mother, both of them, they have seen to him, and they laughed a lot. And that was something insulting, and that was something, feeling of humiliated. The narrator served someone on the Lutkins. Now you can see this story. What is the main theme of this story? It is a peculiar story. A person, one who is needed to be served in a court, but see here he is hiding his identification. Even though he is the person, but he never told to the lawyer that he is the person. But throughout the day, he took him here and there, here and there, he talked with him different talks, but got nothing. So finally, and he was the person to whom he was searching, the lawyer was searching, that finally came to know. So in this story, what we can learn, so we should not, make foolish to other. We should not make foolish to other. That is the main thing. So, students, so once again, I would like to tell you in Hindi this lecture, because I don't want to, another Hindi video. So, within one video, I wanted to close this one. So, if yet you haven't subscribed my channel, प्लीज सब्सक्राइब it. सो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है और ये द हैक ड्राइवर नाम का ये चैप्टर है और इसका जो लेखक है और सिनक्लेयर लुइस ओके ये उसका लेखक है। तो ये स्टोरी जो है एक हैक ड्राइवर के बारे में बताया जाता है
जो जिसका नाम है ऑलिवर लटकिंस है। तो वो क्या होता है कि वो एक कोर्ट पे गवाह होना होता है उसको, क्योंकि एक केस चल रहा होता है, उसी केस में वही एक गवाह होता है। लेकिन दोस्तों बच्चों यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ हम एक वकील को देखते हैं, एक लॉयर को देखते हैं। वो लॉयर का ड्यूटी होता है कि ऐसे जो गवाह होते हैं उसको ला करके कोर्ट में पेश करना। तो वो क्या होता है कि चला जाता है उस गांव में, और छोटा सा शहर है वहाँ पे जहाँ पे लटकिंस रहता है। जैसे वो वहाँ पे चला जाता है, चला जाने के बाद एक हेड ड्राइवर उसको मिलता है। वो हेड ड्राइवर क्या करता है कि उसको जगह जगह पर घुमाता है, इधर उधर घुमाते, उसको प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर आपको हेल्प करूँगा, कि आप क्या कर लोगे और ऑलिवर लटकिंस को प्राप्त कर लोगे। तो पर आवर के लिए $2 उससे वो मांगता है, और मतलब उसके किराए के रूप में। फिर वो घूमते हैं शहर में और जगह जगह पर उसको घुमाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह को दिखाता है। और खाली उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। और उसकी बातों से क्या होता है कि ये लॉयर जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है, और वास्तव में उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरा और विशेष सहायक है, उसको ऐसा लगता है। फिर उसके बाद ये दोनों घूमते हैं और कहीं पर भी और लटकिंस नजर नहीं आता है। और जहाँ कहीं भी लगता है कि लटकिंस वहाँ मिलेगा, उस जगह पर उसको लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लटकिंस नहीं होता। ठीक है, लटकिंस वहाँ पर नहीं होता। फिर फाइनली बात इस प्रकार होता है कि वो मतलब फिर उसको ऐसे जगह पर लेके जाता है जो कि एक फ्रेंच है, और जहाँ पे और ये लटकिंस जो पॉकर खेलता है, और साथ ही साथ एक बार्बर के पास लेके जाता है। फिर उसके बाद कोल्ड रूम में लेकर के जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसको नहीं मिलता है, कहीं पर भी वो व्यक्ति उसको नहीं मिलता है। और उसके चलते तो दोपहर का टाइम होता है और धूप बहुत भयंकर लगने लगी। तो अभी नायक जो है ऑर्डर देते हैं लंच के लिए। तो लंच के लिए भी क्या होता है कि वो और मतलब अपने मतलब हेड ड्राइवर जो है अपनी वाइफ को कहता है कि भाई आप तुम लंच बनाओ। लंच बन जाता है और उसके लिए वो $50 चार्जेस भी ले लेता है। तो इस प्रकार ये लोग खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद लंच हो गया उनका, फिर वो चले गए उनके माँ के पास, मतलब लटकिंस का घर। जैसे लटकिंस का घर में वो पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद जैसे माँ को पता चल जाता है, लटकिंस का माँ को पता चल जाता है कि ये तो मेरा बेटा को लेने के लिए आया है, ठीक है ना, ये मेरा बेटा को लेने के लिए आया है। जैसे ये बात उनको पता चल जाता है, और तभी वो क्या करते हैं कि बड़ा सा रॉड लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं उनको मारने के लिए। जैसे उनके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए, तब ये डर से क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं और तभी चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए कहते हैं कि आइंदा ही तुम यहाँ पे आओगे तो तुमको जला डालूंगी, ऐसा वो कहती है। जैसे वो ऐसा कहती है तो फिर वो चले जाते हैं। अब वो और कोई उपाय नहीं उनके पास, घूमते हैं देखते हैं लेकिन और कोई मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये खाली हाथ अपने शहर वापस चला जाता है ये लॉयर। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि एक समय आता है, अभी कोर्ट में हियरिंग का टाइम आ गया और उस गवाह को जरूरी है। अब वो ऑलिवर लटकिंस का आना जरूरी है, पहले से तो वो आता ही नहीं था, है ना, इधर उधर मतलब कभी भी दर्शन नहीं आता था, बड़ा चालू आदमी था वो, है ना। तो अभी ऐसा एक व्यक्ति को उस लॉयर के साथ मिला करके भेजा जाता है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी जानता है किसको, लटकिंस को वो व्यक्ति जानता है, और फिर उसको लेकर के चला जाता है। वो उसी जगह पे पहुंचते हैं जिस गांव का नाम है मिलन, न्यू मिलन, छोटा सा शहर भी है वो। वहाँ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद फिर तब उसको पता चलता है कि वो पिछले टाइम जो आया था जिसको ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं था बल्कि यही व्यक्ति था, ये जो हेड ड्राइवर है वही क्या था कि ऑलिवर लटकिंस है। तो इसी प्रकार से और उसके माँ और बेटे ये दोनों मिलकर के काफी वहाँ पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक प्रकार का ह्यूमिलेटेड और मजाक उसके ऊपर हो जाता है।
तो लॉयर आखिरकार बाद में यही सोचता है, फिर जैसा भी हो उसको अपना जो विटनेस मिल जाता है और उसे लेकर के वो जाता है। तो इस स्टोरी में हमने ये देखा कि कैसे लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ लोग अपने सूझबूझ के अभाव से बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आए। थैंक यू।